Dear students, I hope you're all well. So, last week we discussed about the electric cell in the chapter Electricity and Circuits. Today, we'll move to understand about a bulb connected to an electric cell. So, let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. Okay, how do we do that? So, for this, we have to do an activity. We have to take four lengths of electric wire with differently colored plastic coverings. Okay, remove a little of the plastic covering from each length of wire at the ends. Okay, like this. Suppose you have four length. Okay, one, two, three, four, like this. You have to take electric wire and you have to just remove one plastic covering from their ends. Okay, from here. So and this would expose the metal wires at the end of each length, fix the exposed parts of the two wires to the cell and the other. So fix the exposed parts two of the two wires to the cell and the other of the bulb as shown in figure 12.3 and 12.4. So you can see like this you have to make electric cell with two wires attached to it. Okay, I am saying that this type of wire you have to make. Okay, one wire is attached here and one in below side, like that, and bulb connected to the two wires. Okay, one bulb also you have to connect with the rest of two wires like this. One is here, second is here. So you can stick the wires to the bulb with the tape used by electricians. Okay, use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. Okay, so you can use for your ease whatever is uh, available at the time. So now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in six different ways as have been shown in figure 12.5a to f. Okay, like this you have to make. Okay, see carefully these figures. Okay, you can see that one terminal is attached here and like that. Okay, and one you have to remove from them, then you have to remove from here, and in D. Okay, in D you have to put both the wires in from here side, and in E from upper side. Okay, and in F again you can attach these wires from upside and this can be upper side. So these changes you have to done different arrangement of electric cell and bulb. Okay, so now what you have to do for each arrangement, find out whether the bulb glows or not. Okay, in only here if you see in figure, only in two conditions the bulb will be glow. So how it is take place we will understand now. So write yes or no for each arrangement in your notebook. Okay, now carefully look at the arrangement in which the bulb glows. Compare these with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? Okay, so we will find the reasons now. So keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement figure 12.5a. First one, move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangement in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to other? Okay, so these are the experiment which you have to find, because physics is an experimental one subject. So if you do this experiment you can understand more better. It is very easy experiment and you can do in your home also. Okay, so how an electric circuit take place? Now we will be understand that the conditions in which you bulb close or not. Okay, so in activity 2 you connect one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and f, whenever I am asking, or okay, it's not possible to see present every time, okay, the figure in the video, so you can match in your book also. The two terminal of the electric cell were connected to two terminals of the bulb. Okay, such an arrangement is an example of an electric circuit. Okay, I show you. So this is an electric circuit. Okay, when one terminal is attached with positive side, one is from negative side, you will understand in more later.
So this is an electric circuit example. The electric circuit provides a complete path for electricity to pass. Okay, electricity means current pass हो रहा है, ठीक है, current to flow between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. जब एक सर्किट से इसी सर्किट के थ्रू जब करंट पास होगा तभी बल्ब जो है ग्लो करेगा. In an electric circuit, the direction of the current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6. ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, माइनस होता है, आपने देखा भी होगा सेल में, देखना एक साइड पॉजिटिव लिखा हुआ है एक नेगेटिव, ठीक है, दो टर्मिनल्स होते हैं. सो यहाँ से देखो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से जो है यह करंट वापस आ रहा है, तो जो है बल्ब ग्लो कर रहा है. When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. ठीक है, जब ये कनेक्टेड होते हैं वायर्स टर्मिनल से, सो करंट पास होगा, ठीक है, फिलामेंट से उसके बल्ब में, तभी बल्ब जो ग्लो करेगा. ठीक है, फिलामेंट मैंने लास्ट वीक में आपको समझाया था. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर. सो समटाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल. This may happen if the bulb has fused. Okay, in homes, whenever you use bulb, electric bulb, sometimes we say na that bulb fuse ho gaya. So filament will be fall off it. Look at a fused bulb carefully. Is the filament inside it intact? ठीक है, वही कह रहा है कि जो फिलामेंट है वो चिपका हुआ है या नहीं. ठीक है, प्रीवियस टाइम्स में आपने देखा होगा कि कुछ लोग बल्ब खोल के जो है फिलामेंट को अटैच कर लेते हैं दोबारा और फिर से वो जल जाता है. ठीक है, तो अगर बल्ब फ्यूज हो रहा है तो इसका मतलब उसका फिलामेंट जो है कहीं ना कहीं इंटैक्ट नहीं है उसमें. ओके, सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स. अब ये बल्ब फ्यूज क्यों होता है? वन रीजन फॉर ए बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, या तो फिलामेंट ब्रेक हो जाए. अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell. Therefore, a fuse bulb does not light up as no current passes through its filament. ठीक है, जब फिलामेंट से ही करंट पास नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ठीक है, can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure 12.5 B, C, D and E? ठीक है, इनमें क्यों करंट पास नहीं हुआ? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने अरेंजमेंट बनाए थे ये, तो इसमें देखिए यहाँ पे भी करंट पास नहीं हो रहा है. ठीक है, इसमें भी नहीं हो रहा है. ठीक है, इसमें भी नहीं हो रहा है. इसमें इन चारों में करंट पास क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं. सो नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल. व्हाट यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ. तो आप इससे टॉर्च भी बना सकते हैं अपने से लिए. ठीक है, इसी को यूज़ करके. तो इनमें क्यों नहीं करंट पास हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टर्मिनल्स जो है सही से अटैच नहीं हुए कहीं पे. ठीक है, जैसे इसमें देखो ओनली वन टर्मिनल अटैच टू द बल्ब. ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही है. इसमें दोनों जो तार हैं एक ही में आ गए हैं. ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही है. इसमें भी ये रीज़न है. सो दीज आर द रीजन्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट passing through these bulb. Okay, in activity 3 you have to make a torch. So take a torch bulb and a piece of wire. Remove the plastic covering at the two ends of the wire as you did before. Okay, wrap one end of a wire around the base of an electric bulb as shown in figure 12.7. Fix the other end of the wire to the negative terminal of an electric cell with a rubber band. Now bring the tip of the base of the bulb, that is its other terminal, in contact with the positive terminal of the bulb. इसे देखो इस तरह से बनाना है होममेड टॉर्च. ओके, सिंपल है. ठीक है, इसी जो फर्स्ट प्रोसेस आपने की थी अरेंजमेंट बनाए थे डिफरेंट, एक अरेंजमेंट इस तरह का बनाना है. ठीक है, लेकिन इसमें एक टर्मिनल है इसके साथ सारे जोड़ने और एक टर्मिनल इसको साथ जोड़ना है. ठीक है, does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? No. Is this not similar to what you do? You switch your torch on or off. ठीक है, सेम ऑन और ऑफ है. सो पहली का एक है सोचना है कि अरेंजमेंट ऑफ द सेल विद द बल्ब विल टॉर्च बल्ब ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट. क्या इससे बल्ब ग्लो कर सकता है इस अरेंजमेंट से? ठीक है, इसको आपको जो है खुद करके देखना होगा. Next thing is electric switch. We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch
टू यूज इन अवर सर्किट। ठीक है, अब बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बल्ब एक बार लगाना है फिर निकालना है। ठीक है, तो ये जो है बन तो गया है आपका टॉर्च, लेकिन ईजियर वे नहीं है। तो इसके लिए एक और एक्टिविटी करते हैं। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्रॉइंग पिन्स, a safety pin or a paper clip, two wires and a metal sheet of thermocol or a wooden board. Okay, like this you can make a simple switch. You have to make, insert a drawing pin into the ring at the one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure 12.8. Make sure that the safety pin can be rotated freely. Now, fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switch. Okay, in this activity, like this you have to make. ठीक है, इस तरह से जो है सेफ्टी पिन है ये आपका क्या काम करेगा, एक स्विच की तरह। ओके, so now make a circuit by connecting an electric cell and a bulb with this switch as shown in figure 12.9, like this. Rotate the safety pin so that it's free and touches the other drawing pin. What do you observe? Now move the safety pin away. Does the bulb continue to glow? No. Okay, the safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch two of them. Okay, in this position, the switch is set to be on. When in figure 12.10 you can see, जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, पिन को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, सेफ्टी पिन है, आपने इसमें अटैच कर दिया तो ये ऑन पोजीशन में जाएगा। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पास, क्योंकि मटेरियल मेटल का बना हुआ है, थ्रू इट द सर्किट वाज कंप्लीट, हैंस द बल्ब क्लोज। ठीक है, सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा कि जब पूरा एक सर्किट बनेगा तभी जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन्स वाज नॉट इन द touch with the other drawing pin. The circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pins. Okay, so in this position the switch is set to be off as in figure 12.9. ठीक है, 12.9 में देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या ऑफ है, अभी अटैच नहीं था जब हमने पहले देखा। ठीक है, यहाँ पे क्या सेफ्टी पिन अटैच नहीं है, इसमें देख पा रहे होगे फिगर 12.9 में। ठीक है, इसमें क्या है, स्विच के साथ तो पूरा अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पिन इससे अटैच नहीं हुई है। ठीक है, तो जब तक अटैच नहीं होगी तब तक एक कंप्लीट सर्किट नहीं बनेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, अ स्विच इज ए सिंपल डिवाइस। स्विच क्या होता है, सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। The switches used in lightening of electric bulbs and other devices in home work on the same principle, although their design are more complex. ठीक है, जो आपके स्विच बने रहते हैं, बोर्ड, स्विच बोर्ड देखते हो, ठीक है, ऑन ऑफ करते हो, लाइट ऑफ करते हो, टीवी खोलते हो, सब में स्विच बना हुआ है। ठीक है, तो उनका थोड़ा डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो एक बेस होता है, बेसिक होता है, वो प्रिंसिपल एक सेम सबके लिए है। ठीक है, Bujo has drawn the inside of the torch as in figure 12.11. When we close the switch, the circuit is completed and the bulb glows. Can you draw a red line on the figure indicating the complete circuit? Okay, complete circuit, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, रिफ्लेक्टर इसमें देख पा रहे होगे फिगर में, इनसाइड व्यू, ठीक है, इनसाइड व्यू ऑफ ए टॉर्च है, ठीक है, प्लास्टिक गेजिंग है, स्लाइड स्विच है, इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, रिफ्लेक्टर है यहाँ पे। सो इन दिस फिगर स्लाइड स्विच इज शेयर। ओके, यहाँ पर से जो है स्लाइड स्विच है, ठीक है, इससे ऊपर नीचे करके जो है ये बल्ब को ग्लो कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। So this is about the complete circuit. Okay, you have to indicate here that it indicating complete circuit, and further things, electric conductors and insulators will be discussed in next class.